Hi everyone, continuing with our series on some of the important topics in the NCERTs, today we'll be going through the causes of origin of Jainism and Buddhism in the 6th century BCE. Now, as you must have figured out by now, this is not from the new NCERT but from the old NCERT of R.S. Sharma. And at the end, I'll explain as to why I picked this topic and how important this topic is. So please watch the full video. So I'll basically I'll discuss this topic in 3 points. There are 3 points that R.S. Sharma is making, and those points will basically explain as to how these religions came into existence. Now, the first one is that in the post-Vedic times, society was clearly divided into four varnas, and the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras, wherein each varna had a well assigned and well defined function. Now, I'm sure you know about this, you are well aware of this arrangement as to how the society was hierarchical in nature and what kind of privileges were enjoyed by each of the order. So, I'm not going to into that. I'll go directly to this point wherein R.S. Sharma says that naturally the Varna divided society seems to have generated tensions और इस टेंशन का मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं that the Kshatriyas who functioned as rulers they reacted strongly against this ritualistic domination of the Brahmanas and seem to have led a kind of a protest movement against the importance attached to birth in the Varna system. तो ये क्षत्रिय रिएक्शन जो था अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ प्रीस्टली क्लास हु क्लेम्ड वेरियस प्रिविलेजेस ये एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता है origin of new religions का. Now, this gets manifested by the fact that both वर्धमान महावीर जिन्होंने जैनिज्म को फाउंड किया और गौतम बुद्ध जिन्होंने बुद्धिज्म को फाउंड किया वो क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे and both of them disputed the authority of the Brahmanas. So, the first point is that Jainism and Buddhism were actually a reaction against the ritualistic domination of the priestly class who claimed various privileges. So, this was the first point. Now, the second point, which R.S. Sharma calls as the real cause of the rise of these religions, was the spread of a new agricultural economy, and this is very important. And this point is actually one of the reasons as to why I picked this topic. So this is a fascinating study of the economic reasons as to how a change in the economic context brings about corresponding changes within the socio religious and political setup. राइट. सो इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं. इसमें हम देखते हैं कि एक नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का स्प्रेड होता है. कौन से रीजन में? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो कि इंक्लूड करता था ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न और सदर्न बिहार. अब इस रीजन में अराउंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता था और उसकी वजह से ये सारा रीजन 6th century BCE से पहले बहुत थिक जंगल से भरा हुआ था. बट द इम्प्लीमेंट्स दैट द पीपल, जो उन लोगों के पास उस टाइम इम्प्लीमेंट्स थे बोन के, स्टोन के, कॉपर के, उनसे आप इन जंगल्स को क्लियर नहीं कर सकते थे. इसीलिए ये लोग हम देखते हैं कि वो लेक्स के किनारे पे बहुत ही प्रिकेरियस काइंड ऑफ लाइफ बसर करते थे. लेकिन 6th century BCE में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जो कि कोइंसाइड करता है इस फेज के साथ में. वो था एमर्जेंस ऑफ आयरन. हमें इस टाइम पे आयरन की डिस्कवरी होती है और आयरन का यूज बेसिकली स्टार्ट हो जाता है. अब उससे ये लोग आयरन की एक्सेस बना सकते थे और जिससे इन जंगल्स को इजीली क्लियर किया जा सकता था एग्रीकल्चर के लिए.
और जब ये जंगल्स क्लियर हो जाते हैं, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता है, तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन में भी काफी इंक्रीज होता है। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट जो प्रेजेंट ऑर्डर था, उस टाइम का प्रेजेंट सोसाइटी थी, वहां पे एनिमल सेक्रीफाइस वाज प्रेवलेंट। सो इस लेकिन लेकिन ये जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, इसमें एनिमल हस्बेंड्री का बहुत बड़ा रोल था। अब ये जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आयरन प्लॉ शेयर पे बेस्ड थी, इसमें बुलक्स चाहिए थे, जो इन खेतों में जो ये नई लैंड एग्रीकल्चर के लिए तैयार की गई थी, वहां पे वो हल चला सके और ताकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सस्टेन हो सके। बट जो वैदिक प्रैक्टिस था एनिमल sacrifices का, that was actually becoming an obstacle in the progress of this new agriculture. तो कैटल वेल्थ अगर नीचे आ जाता है, तो उससे इस इकोनॉमी को, इस न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को काफी लॉस होता। इसीलिए हम देखते हैं, इसीलिए इस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की सस्टेनेंस के लिए, अगर ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को स्टेबल होना था, तो ये जो किलिंग थी, ये जो सैक्रिफाइसेस थी, दैट हैड टू बी स्टॉप्ड। एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस दैट Jainism and Buddhism, both Jainism and Buddhism, denounced sacrifices or killing or violence in any form. Right? So let's move on to the third point, which is that this period saw the rise of a number of cities. अब cities के rise के बाद हम देखते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ जाता है। और उसके बाद क्योंकि बहुत सारे आर्टिजन्स और ट्रेडर्स जो हैं वो इस टाइम पे कॉइन्स यूज करना स्टार्ट करते हैं। एंड द अर्लीस्ट कॉइन्स बिलोंग टू 5th century BC एंड दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स। लेकिन वो सर्कुलेट होते हैं, दे वर सर्कुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अब इन कॉइन्स के यूज से ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेट होता है। और आप समझ सकते हैं कि जब ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेट होगा, तो उससे वैश्यस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, बिकॉज दे वर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड कॉमर्स। लेकिन अब थर्ड पॉइंट ये है कि इवन दो द वैश्यस वर डूइंग वेरी वेल इकोनॉमिकली बिकॉज ऑफ द राइज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, बट the Varna in the Varna order, they were given third position, right? So naturally they were looking for a religion which would improve their position. तो इसीलिए जो मर्चेंट्स थे उस टाइम के, जिनको सेठीज कहा जाता था, उन्होंने बहुत जेनरसली जैनिज्म को और बुद्धिज्म को पेट्रनाइज किया और बहुत जेनरस गिफ्ट्स दिए। और ये करने के 3 रीजंस थे। फर्स्ट जो रीजन था वो ये था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म ने अपनी इनिशियल स्टेज में, दिस इज इंपॉर्टेंट, इनिशियल स्टेज डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू एग्जिस्टिंग वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम को जैनिज्म और बुद्धिज्म ने इनिशियल स्टेजेस में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो उससे सारी कम्युनिटीज एक एट पार आ जाएंगी, सारी कम्युनिटीज को बेसिकली हायरार्की खत्म हो जाएगी, तो आपको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा। एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वुड एलिवेट द स्टेटस ऑफ द वैश्यस। नाउ द सेकंड पॉइंट वाज दैट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ नॉन वायलेंस। अगर नॉन वायलेंस होगा, तो वॉर्स का एंड हो जाएगा बिटवीन डिफरेंट किंगडम्स, और उससे कॉन्सिक्वेंटली ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट मिलेगा। एंड अगेन दैट वुड एड टू द prestige and status of the Vaishyas. Number third is that the Brahminical law books, धर्म सूत्रास, उनमें मनी लेंडिंग को बहुत खराब माना जाता था। और वो इंसान वैश्यस बेसिकली, बिकॉज दे वर द मर्चेंट्स हु वर लेंडिंग मनी ऑन रेंट, सो द वैश्यस वर लुक्ड डाउन अपॉन बिकॉज दे वर इन्वॉल्व इन मनी लेंडिंग and in the collection of interest. Now, therefore, Vaishyas who lent money on account of growing trade and commerce were not held in high esteem,
उनको they were not held in high esteem, so they were looking to improve their social status. इसीलिए वो ऐसे religions को ढूंढ रहे थे, ऐसे religions को सपोर्ट कर रहे थे जिनसे उनका social status improve होगा. And that is why we see that Jainism and Buddhism became extremely popular in 6th century BC, and a large number of people, especially the merchant class, they joined these religions, and and that is how their numbers actually increased. So this is what this topic was all about. I'm sure it was helpful. Thank you for watching.